Mind Warriors, how are you all doing? Again, I welcome you to this very essential series called Life-Saving Skills. Friends, after learning some life-saving skills by now, you must have understood that knowing life-saving skill is not only important to save someone else's life, but to save our own selves as well. Life-saving skills are important to strengthen our mind and train us to handle emergency situations. जैसे किसी भी सिचुएशन में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें ब्रेवली बिहेव करने में सक्षम करता है। सो हर एपिसोड में हम देख रहे हैं एक नई स्किल और ये सीरीज खत्म होते होते हम सीख जाएंगे 8 लाइफ सेविंग स्किल्स। हाउ यूजफुल इज दैट? Then in any emergency situation, you can be of help to someone else and of course, you can save yourself from danger too. आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसी ही नई स्किल के बारे में। ये स्किल जानना circumstantially काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि this can be a boon for whoever faces such a situation. आप इस स्किल के जानकार होंगे तो आप खुद को तो सेव कर ही सकते हैं, बट दूसरों को सेव करके उनकी जान भी बचा पाएंगे। मानो आप किसी बीच पर या लेक साइड घूमने जाते हो और गलती से आप या आपके साथ आए हुए फ्रेंड्स पानी में गिर जाते हैं और उनको स्विमिंग करना भी नहीं आता, तो बिना घबराए हुए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इंसान जो स्विमिंग ना जानता हो वो पानी में गिरे तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। It might seem impossible when you are a non-swimmer and suddenly find yourself underwater. But कुछ भी हो जाए, you have to stay afloat. हाथ पैर हिलाते रहना है और कुछ भी हो जाए, मूवमेंट स्टॉप नहीं करनी है। अगर पैनिक होकर अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया तो पानी आपके नाक में, मुंह में जाने लगेगा और आपकी तकलीफ बढ़ती ही जाएगी। Even if you just have your face out of the water, you can comfortably breathe. Get some air in your lungs to help you float. अगर आप खुद पानी में गिर गए हैं और नजदीक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हाथ ऊपर करके वेव करने की कोशिश करें। Try to get someone's attention by waving your hands and yelling. Try to lay on water. That head position will cause your legs to float on the surface. Then you're free to take as many breaths as you can. हर एक इंसान की बॉडी पानी में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। How your body will respond depends on your weight and height. मैं आपको कुछ सिंपल वाटर एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा आपका वाटर बिहेवियर कैसा है। Whether you can do these exercises or not, they will give you an insight into how your body responds in the water. The more you practice being in water, otherwise, the more you will control how your body behaves as you swim. जैसे जैसे आप पानी में स्टेबल होना सीख जाओगे, आप अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाओगे। शुरुआत में आप सरफेस के पास खड़े रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। So note down these exercises. Exercise 1, face down floating. Take a deep breath and submerge your face while bringing your legs up to the surface. Lay in that position for as long as you can. Hold your breath. आप जानने की कोशिश करें कि how your body behaves in this stationary position. You will most probably find your legs slowly sinking first. See if any small movements can slow down their sinking rate or even help them back to the surface. Exercise 2, push and glide. Inhale deeply, then face down. Push away from the pool wall. Make sure your body is sleek and stretched out. In one breath, glide as far as you can. As your momentum weakens, you can notice that you start to sink. Find out what little motions you can make with your hands, feet, or legs to help you stay afloat. Use a smooth front crawl or breaststroke motion to pass the water. Exercise 3, push and glide with kicking. The only difference between this workout and exercise 2 is the push and glide movement from the pool side. Leg kicks should be added this time to help keep the momentum and avoid sinking. Use a leg kick similar to the front crawl or breaststroke.
Exercise 4. Supine push or glide. From the pool side, supine perform a push and glide. Make sure your chest and hips are elevated close to the water surface and that your head is facing upward. Your legs and feet will be able to touch the surface of the water or be close to it. Add a light leg kick and hand motion when the glide starts to slow down to keep it moving. तो ये तो हो गए प्रिवेंशन टेक्निक्स, ताकि आप पानी में गिर भी गए तो अपने आप को संभाल सको। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप डूबने लगो तो आपको क्या करना चाहिए? How can you save yourself from drowning? Let's see. You can prevent drowning. 1. Learn basic swimming and water safety skills. Join swimming classes preferably during summer. 2. जब भी आप पानी के आसपास घूमने जाएं, तब आप किसी बड़े की निगरानी में ही रहना. Ask them to supervise you no matter how confident you feel. 3. Always wear a life jacket. While boating, for people of all ages and even strong swimming skills, life jackets lower the risk of drowning. Children should compulsorily wear life jackets during all activities in and around natural water. 5. Learn CPR. God forbid, अगर कोई पानी में गिर जाए तो you must know CPR. Your CPR skills could save someone else's life in the time it takes for medical help to arrive. CPR के basic tutorials online भी available हैं, but it is very important to look for tutorials only from credible sources. 6. Know the risks of natural waters. Lakes, rivers and oceans, आप जहां भी जा रहे हो, उस प्लेस की जियोग्राफी को थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिए. Hidden dangers present in these water sources include hazardous currents or waves, rocks or plants, and poor visibility. Before participating in any activities on, in, or near water, check the forecast. Rapid changes in the local weather can result in hazardous severe flooding, powerful winds, and thunderstorms with lightning strikes. So friends, अब आपको पता चल गया कि how to save someone from drowning in the water. So this was another life-saving skill you learned. आने वाले एपिसोड में हम इस सीजन के एक और लाइफ सेविंग स्किल के बारे में जानेंगे, तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना. उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा. अब भी सब्सक्राइब कीजिए अपने माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए ये बहुत ही इंसाइटफुल और इम्पोर्टेंट सीरीज. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.